नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करुच्ची स्टडी की ओपीसी चैनल रे आज गोटे इम्पोर्टाट डिस्कसन मुझे सहित करी गोटे हूँ रिपोर्ट एंड इंडिसेस को लेकिन पूरा डिस्कसन करा रिपोर्ट एंड इंडिसेस आप जानिथे गोटे दुईटा क्वेश्चन आपंकर रिपोर्ट और इंडिसेस को आसूची तो विगत 6 मास भितर यानी कि जनवरी 2025 रु जून 2025 मध्य जिते आपंकर रिपोर्ट एंड इंडिसेस अच्छी ये पूरा इंडिसेस को आज डिस्कस करवा मोस्टली जो लेंथ या जो टाइप रो क्वेश्चन द नेचर ऑफ क्वेश्चन आप देखिए तो जनरली से मैंने पचार कि कहा द्वारा पब्लिश करा जाइए रिपोर्ट टी इंडिया रैंकिंग केते अछि ए टाइप रो क्वेश्चन आसुची तो से डायरेक्शन रे ही पूरा आज डिस्कशन आम करवा डिस्कशन करने पूर्व मुझे आपको कही रखे जो मैंने मोर फाउंडेशन कोर्स जॉइन करने को चाहूँगी आरंभ 6.0 बैच प्रिलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू बर्तमान डबल धमाका सेल चली सेल टी एंड हूँ 31 जुलाई रे तेणु जो मैंने चाहूँगी एनरोल करने से एनरोल करेंगे आपन को मो फीचर्स कहीदिए फीचर्स आप देखिए एडमिशन क्लोज हूँ 31 जुलाई रे फीचर्स हूँ 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम कवर करा क्लास नोट्स यानी कि क्रक्स आपन को दिया इंग्लिश एंड हिंदी माध्यम रे 1-to-1 मेंटरशिप अच्छी हैंड रिटन नोट्स अच्छी फॉर द क्विक रिविजन स्पेशल फोकस ऑन द ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स डेली होमवर्क थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली करंट अफेयर्स सेशन मॉड्यूल वाइज टेस्ट अच्छी एक्सक्लूसिव सेशन पर एसे राइटिंग अच्छी अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस अच्छी एंड प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज अच्छी 12टी टेस्ट सीरीज यदि आप फैकल्टीज गुड़ी को देखिए फैकल्टीज माने जो मैंने स्टडी आईक्यू पीसीएस रे आपन को लगातार भाव में पढ़ाऊँ से मैंने ही पढ़ेबे आपन को जदि आप चाहिए किसी डेमो लेक्चर देखापी डेमो लेक्चर भी स्क्रॉल करके आप देखिपारे जॉइन कर प्रोसेस हूँ सिंपल बाय नाउ करेंगे बाय नाउ कलापर आपन को नंबर मागिब नंबर एंट्री कलापर ओटीपी मागिब ओटीपी देलापर पुणी थे बाय नाउ को क्लिक करेंगे किसी भाव में पेज आसो 2 ऑफर्स अवेलेबल को जी एंट्री करेंगे JN लाइव कैपिटल रे JN लाइव एंट्री करेंगे अप्लाई कलापर डिस्काउंटेड अमाउंट होगी आसो ये बाय नाउ करके आपड़ी प्रोसीड टू पे करके यूपीआई करके आप आसीपारे आराम से पेमेंट करके ओके सो ये हूँ सिंपल प्रोसेस तेज चलतु आम डिस्कसन को स्टार्ट करवा फाइन ओके फर्स्ट हूँ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ओडिशा रिलेटेड न्यूज काफी इंपोर्टेंट एटा प्रिलिम्स फिस्कल हेल्थ इंडेक्स आप देखिपारे 2025 रो कहा द्वारा रिलीज करा जाउची नीति आयोग द्वारा रिलीज करा जाउची फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 प्रथम थर पई एटा को इंट्रोड्यूस करा जाइतला जो की एरियाज गुड़िक अच्छी से गुड़िक हूँ आपंकर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि जो एक्सपेंसेस गुड़िक करा जाउची सरकार को द्वारा तो तार क्वालिटी केमती अच्छी क्वालिटी यानी कि को सेक्टर रे स्पेंड करा जाउची रेवेन्यू मोबिलाइजेशन आम देखुचे फिस्कल प्रुडेंस आम देखुचे डेप्थ इंडेक्स और डेप्थ सस्टेनेबिलिटी फिस्कल प्रुडेंस इन द सेंस कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन आम कहूचे या जो वर्तमान समय रे आप देखिए जमी फ्रीवीज गुड़िक अच्छी सरकार कौन कर वेलफेयर एक्टिविटीज ना फ्रीवीज रे स्पेंड करूँ जहाँ उपरे या जहाँ द्वारा अननेसेसरली आपंकर फिस्कल बर्डन रोच तो से फिस्कल कंसोलिडेशन बाय कीपिंग इन माइंड द बजेट डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट या जो रेवेन्यू डेफिसिट अच्छी ये जिनस को मेजर करा जाउची फिस्कल हेल्थ इंडेक्स द्वारा द इंडेक्स असेसेस द फिस्कल हेल्थ ऑफ द ओनली 18 मेजर स्टेट्स अथॉरिटी मेजर स्टेट्स मानकर ये फिस्कल इंडेक्स को स्टडी करा जाइतला with cumulative score of 67.8 Odisha tops the ranking in the fiscal health among the 18 major state authority major states मानक मध्य ओडिशा अपन कहिबे फर्स्ट रैंक रे अपन कर अछि followed by the Chhattisgarh Goa with score of 55.2 and 53.6 respectively तेणु ये क्वेश्चन आसी पारे कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 रे सबुठु या हाईएस्ट रैंक कार अछि या टॉप रैंकर किए सी होची ओडिशा ओडिशा टॉप्स द डेप्थ इंडेक्स 99.0 and depth sustainability ranking with better than average score under the quality of expenditure and revenue mobilization जो डेप्थ इंडेक्स अच्छी हायर द नंबर बेटर द परफॉर्मेंस ओके तेणु से हिसाब रे डेप्थ इंडेक्स हो या डेप्थ सस्टेनेबिलिटी हो ओडिशा इज परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर स्टेट्स आपण कहि परिबे सिग्निफिकेंस कौन ना इंटीग्रेटेड अप्रोच टू फिस्कल हेल्थ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इंटीग्रेटेड अप्रोच फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑफर्स a roadmap for achieving fiscal consolidation तमाने
एक्सपेंसेस को केते आमे कम करूचे स्पेशली जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस अछि या रेवेन्यू अकाउंट जो डेफिशिएंट अछि ताको केमते आमे कम करिबा एंड रादर देन स्पेंडिंग इन द रेवेन्यू एक्सपेंसेस व्हाट और हाउ मच वी कैन स्पेंड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर जोटा कि असेट क्रिएशन रे काम करिवो इंप्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी एज वेल and fostering effective resource management जो existing resources अछि तर sustainability केमते increase करिबा it provides a framework to evaluate the financial well-being of the state economies through key fiscal indicators okay so these are the significance of this fiscal health index आपण कहि परिबे नेक्स्ट सेवा बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड बैंक तरफ एटा को लॉन्च करा जाइछि पब्लिश करा जाइछि विथ रेस्पेक्ट टू बिजनेस रेडी रिपोर्ट जोटा कि आगुरु वर्ल्ड बैंक रो गोटे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थिला से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को सब्स्टिट्यूट यानी कि रिप्लेस करके बिजनेस रेडी या बी रेडी रिपोर्ट को पब्लिश करा जाइछि इस जगह कौन आप देखिए बिजनेस एंट्री कंट्रीज लाइक सिंगापुर ऑफर ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन विद इन अ डे एट मिनिमल कॉस्ट दैट मीन्स जो फैसिलिटेशन प्रोसेस वुड बी इम्प्रूव्ड सो सिंगापुर इज द कंट्री जे कि ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड करुची विद इन वन डे से कौन करुची अप्रूवल दे दूची नुआ बिजनेस को सेट ऑफ करबा पई ओके So in India, business still face multiple steps and incomplete digital integration. The report generates two sets of scores for each economy vis-a-vis topic scores and pillar scores. Okay, तो ये particular report टी आपण देखिबे दुई प्रकार scores को integrate करिछि आपण देखिबे गोटे होछि आपनकर topic score आ गोटे होछि pillar score. This report was next time देखिबा ये थिला आपन business ready. Moving to the next IPBES nexus report. IPBES nexus report is released by the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services आपण कहि परिबे okay this assessment report on the interlinkages among biodiversity water food and health okay सेतमे एटा को nexus report बोली कहवा जाउची मन रखतेबे IPBES nexus report intergovernmental platform on the biodiversity and ecosystem that means biodiversity water food and health condition सहित यानी कि जो holistic हम approach कोचे यानी कि combination of this सेठू हमें report देखुचे biodiversity decline per decade for last 30 to 50 years is 2 to 6%. लास्ट 30 रु 50 वर्ष भितर जो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हिची दैट इज 2 to 6% डिक्लाइन हमको देखिबा को मिले छी थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट जदि आपण देखिबे इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन फॉर द साइबर अटैक तो थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट कोन पब्लिश करूची यानी कि टारगेट यानी कि को सेक्टर रे डील करूची साइबर अटैक रे डील करूची and the United States in the top spot with 140 attacks. So India has emerged as the second highest after the US with respect to the cyber attack man rakhtibe. Israel apankar third rank rach with 57 attacks. Okay. Global Firepower Index 2025, the United States of America has reaffirmed its top position in military strength. Global Firepower इंडेक्स 2025 ये कौन मेजर करूची मिलिटरी स्ट्रेंथ को मेजर करूची एंड मिलिटरी स्ट्रेंथ रे हाईएस्ट या टॉप रैंकर रे की अछि यूनाइटेड स्टेट्स इट इज फॉलोइंग बाय रशिया सेकंड वन China in the Russia and China in the second position and third respectively. India has emerged as a significant military power with the fourth rank. मन रखते बेटा कि global firepower index रे in terms of military strength or military expenses यदि आपण कहिबे तबे India emerged as the fourth rank एटा को मन रखिबे. Global Trust Index देखिबा India has slipped one place to third slot when it comes to the people's trust in the government, business, media and NGOs. तो लोकमानंकर जो भरोसा अछि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेसी अंदर रे द ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड द गवर्नमेंट से केस रे जदि गवर्नमेंट रो आपण देखिबे इंडिया गवर्नमेंट रो ये थर्ड स्लॉट को आसी जाई ओके विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स within the high income group India was ranked as the fourth after Indonesia, Saudi Arabia and China. तो हाई इनकम ग्रुप भितर ये इंडिया होची फोर्थ रैंक रे अछि ओके
while the low income population, India is the third most trusted nation after China and Indonesia. तो high income group रे fourth रे अछि, low income group रे third रे अछि, यानी कि गोटे place से decline ही. India ranks low at 13th place when it comes to the trust of the people in other countries and companies with Indian headquarters. Okay, तो with Indian headquarters जो कंपनी गुड़ी को अछि से भितर यदि आपण देखिबे तबे इंडिया रैंक होची 13th प्लेस रे अछि ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन अदर कंट्रीज. क्लियर? ठीक अछि. तो रैंकिंग को टिके मन रखिया पय चेष्टा करिवे. तबे को केस रे को रैंक हमर अछि. मूविंग टू द नेक्स्ट. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक देखिबा. ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी को नेकी काफी आमरो चलीची न्यूज रे रहउची. तो चांसेस अछि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक जे देखिबे एटा को किए पब्लिश करूची रिलीज करूची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मन रखतेबे इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर जे कि गोटे सॉफ्टवेयर कंपनी अछि. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक. A growing 8% skill gaps leaves 2/3 of the organization unable to address security needs effectively. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ଆମର ସତେ ପୁଅର ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ 2/3 of organization जो गुड़िक ऑपरेट करूचती सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रे they are not able to deal with these cyber attacks. Okay, so cyber security outlook published by the World Economic Forum. Global Risk Report 2025 जदि आपण देखिबे the World Economic Forum released its latest global risk report. Global risk report को किए पब्लिश करूची या रिलीज करूची again by the World Economic Forum. ये global risk report रो main essence कोन theme कोन misinformation and disinformation are viewed as the most severe global risk over the coming 2 years. Misinformation and disinformation basically they are related to जोटा आपनकर fake न्यूज आपण कहि परिबे र्यूमर आपण कहि परिबे ई सब जिंस. दिस इज वन पार्ट. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रैंक सेकंड. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड स्टेट बेस्ड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इज व्यूड एज द थर्ड बिगेस्ट थ्रेट. तो बट सबुठु नंबर 1 थ्रेट रे आपनकर अछि मिसइनफॉर्मेशन डिसइनफॉर्मेशन. सेकंड होच एक्सट्रीम वेदर एंड स्टेट बेस्ड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जोटा कि आपण सिंपली कहि परिबे जेमति इजराइल एंड हमास या आपणकर पैलेस्टीन रो डिस्प्यूट हो किंबा ईरान सहित यूएस रो डिस्प्यूट हो इंडिया एंड पाकिस्तान रो डिस्प्यूट हो ये स्टेट बेस्ड आर्म कन्फ्लिक्ट ओवर द नेक्स्ट डिकेड. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिमेन द बिगेस्ट कंसर्न owing to the climate change, okay, or change in the normal weather pattern. Moving to the next, QS World Future Skill Index 2025. India was ranked in the second in terms of the preparedness for jobs for the future, including artificial intelligence and green skills. Okay, only behind the United States. तो QS World Future Skill को नहीं की जदि देखिबा जदियो India is not prepared right now, but we are investing enough on the future requirement. So future रे जो skill requirement अच्छी India would be considered in the second position. India was ranked at the 25th across all indicators, which includes the alignment between the skill and employer needs. यदि सबु indices गुडी को देखिबे सबु indicators गुडी को देखिबे तबे India is on the 25th rank in terms of the skill and employer needs, academic readiness and the economic transformation. India's overall ranking puts it as the future skills contender as per the report. Okay, तो को कैटेगरी रहइबो ये होची फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर. ऑब्वियसली इंडिया विल डू बेटर इन नियर फ्यूचर विथ रिस्पेक्ट टू द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपण कहि परिबे एन एमर्जिंग स्किल सेट रो जो रिक्वायरमेंट अछि. ओके फाइन. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक कहा द्वारा पब्लिश करा जाउची इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा. International Labour Organization 2024, the report said global employment grew in line with the labor force, keeping the unemployment rate steady at 5%. Unemployment rate तो 5% अच्छी, but global employment आपनकर increase ହେଇଛି.
The youth unemployment showed the little improvement, remaining high at the 12.6%. तो youth जो young population अछंदी, young generation अछंदी, सेमान का मध्य unemployment still a problem and it's at 12.6%. तो मन रखते वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक एटा की पब्लिश करूची एम्प्लॉयमेंट सहित आपण ताको लिंक करि परिबे. सो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. UN World Economic Situation and Prospects 2025. UN World Economic Situation and Prospects. The global economic growth is forecasted as the 2.8% in 2025, 2.9% in 2026. So global economic growth. Global economic growth man rakhte हुए. It is largely unchanged from the rate 2.8% recorded in 2023 to estimated to 2024. तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट के करूची यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स. China is facing the prospect of gradual economic moderation with growth estimated as the 4.9, projected as the 4.8. That means ये कहूची ये जो पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट्स या रिपोर्ट कहूची कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो गुड़िक अछि या मेजर इकोनॉमीज से माने काइंड ऑफ से जो फास्टर ग्रोथ मिलेवा कथा, दे आर नॉट गेटिंग दैट फास्टर ग्रोथ, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ए स्टैग्नेंट or very slow growth rate, with a very slow rate they are growing. Henley Passport Index 2025, India's ranking has dropped by 5 points to 85 this year in a global passport index. An Indian passport holder can travel visa free to 57 destination. मन रखते हुए Henley Passport Index जी के अपन का पासपोर्ट रो रेटिंग या रैंकिंग करे, इंडिया रो पासपोर्ट रो रैंकिंग 5 पॉइंट्स तळो को खसिची. That means 85 this year in the global passport index. Singapore topped in the index for the second consecutive year. India's ranking in the Henley Passport Index for 2025 was 80th globally, यानी कि 24 रे थिला 80, 25 रे हला 85. Okay, so this is the ranking which you can see with respect to India. And India को visa free केते countries दउचंदी 57. World Economic Forum Global Cooperation Barometer 2025. World Economic Forum's Global Cooperation Barometer 2025 was launched in Geneva. मन रखते बेटा, जिनीवा रे आपनकर ग्लोबल इकोनॉमिक बैरोमीटर को लॉन्च करा जाइथला by the Institute World Economic Forum. It reveals that international cooperation has stagnated due to the increased geopolitical tension and instability. That means जो global cooperation barometer कोण मेजर करूची among the countries केते cooperation and coordination अछि, and in that sense cooperation has declined due to this increased geopolitical tension जोटा कि से इजराइल हमास या पालेस्तीन हो, ईरान एंड यूएस हो, इंडिया एंड पाकिस्तान हो. so tension among the countries has increased. So the barometer uses 41 indicators to measure the current state of the global cooperation on different issues or along the 5 pillars. ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज यानी कि जोटा कमे इन्वेस्टमेंट कहि परिबा, एफडीआई एंड एफआईआई कहि परिबा, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कहि परिबा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल कहि परिबा, हेल्थ एंड वेलनेस कहि परिबा, पीस एंड सिक्योरिटी कहि परिबा. दीज आर द 5 पिलर्स ऑन व्हिच ग्लोबल कोऑपरेशन को मेजर करा जाउची कहा द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मन रखते हुए. नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ jobs report 2025. Again, the World Economic Forum released a report titled the Future of Jobs Report 2025. 170 million new jobs will be created and 92 million jobs will be displaced, resulting in net increase of the 78 million jobs by 2030. Okay, तो ये आपनकर फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट को किए पब्लिश करूची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. 59% of the global workforce will need reskilling and upskilling by 2030 to remain competitive in the market. तेणु 59% 59% लोक अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग करने को पड़ो, कारण जदि से कंपिटेटिव यानी कि एडिक्वेट यानी कि एलिजिबल रहिबे इन द मार्केट, प्रोवाइडेड ये जो न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी रो चैलेंजेस भी हमको देखा पड़ो. 2024 Global Water Monitor Report. 2024 Global Water Monitor Report was released by the Australian National University. 2024 alone, the water-related disaster claimed over 8,700 lives, displaced approximately 40 million people. It inflicted economic losses exceeding 550 billion. So, Global Water Monitor Report, monitor kon kuruchi water-related
डिजास्टर को करूचे सपोज सुनामी इज वन सच अर्थक्वेक है एंड सुनामी रे आपण देखिबो वाटर इज द प्रॉब्लम फ्लड है खास करके अर्बन फ्लड जो प्रॉब्लम गुड को क्रिएट करूची सो इट्स सिंपली मेजरिंग दीज क्राइसिस व्हिच आर रिलेटेड टू द वाटर लेट्स से scanty or the lack of adequate rainfall also leads to the आपनकर drought condition भी आपनको देखिबाकू मिलेबो corruption perception index 2024 transparency international releases corruption perception index 2024 transparency international releases corruption perception index 2024 denmark topped the list जो scandinavian countries होचंदी denmark topped the list of being the least corrupt nation followed by the Finland and Singapore. India ranked the 96 out of the 180 countries. India ranked the 96 among the 180 countries in the Corruption Perception Index 2024. 23 रे रैंक थला देखो तो 93 आहुरी तळकु खसिकी आमे 96 को पळैचे दैट मीन्स द करप्शन इन इंडिया इज रैम्पेंट व्हेनेवर यू राइट मेंस क्वेश्चन से एथिक्स पेपर हो किंबा जीएस पेपर 2 हो करप्शन रिलेटेड जदि क्वेश्चन लिखिबे तेबे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रा रैंकिंग को आपण कोट करि परिबे दैट इंडियाज रैंकिंग हैज डिक्लाइंड ओके ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD released its global investment trends monitor for 2024 global investment trends monitor for 2024 ये हूँ रिपोर्ट बट रिलीज किए करुची UNCTAD मन रखते बेटा ग्लोबल foreign direct investment flows are increasingly by 11% reaching about the $1.4 trillion in 2024. However, when excluding flows through the European conduit economies, FDI was decreased by around 8%. FDI into developed economies was surged by 43%. FDI into developed countries जो increase अपन को रही जी that is the 43% increment या increase हमको देखिबा को मिले जी. Next is Global Economic Prospects Report 2025. The World Bank has released the Global Economic Prospects Report 2025. World Bank मन रखते हुए World Bank has released the Global Economic Prospect Report 2025. It's a flagship biennial publication of the World Bank Group. Flagship biennial in the sense कि 2 वर्ष को थरे एटा को से publish करूचंदी. It scrutinizes trends and projection in the global economy. Global economy projected to expand by 2.7% in both 25-26, same pace as in 2024. So kind of a stagnancy upon koi paribe 24, 25, 26, the same pace of economic growth. Developing economies are now contributing about 45% of the global GDP compared to the 25% at the start of the century. So 21st century start हेतला यानी कि 2001 के 2 जो मसीह स्टार्ट हेतला से हमारे डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल जीडीपी रहतला 25% बट दिस हैज बीन इंक्रीज टू द 45% खास करके इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका चाइना दीज इमर्जिंग कंट्रीज ओके सो रिमेंबर दिस थिंग वर्ल्ड बैंक इज द एजेंसी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एशिया एंड द पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 Asia and Pacific SDG Sustainable Development Goals. It is released by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, SCAP you can call it. Asia and the Pacific has improved with 54% of the indicators having at least 2 data points in 2024. Okay, 54% of the indicators having at least 2 data points. Significant gap prevail, particularly concerning the disaggregated data by the age, disability, sex and location. The report had warned that an urgent action is required if the 17 sustainable goals are to be met by 2030. This has been highlighted by the Asia and the Pacific SDG Progress Report and it is published by the SCAP. Okay, that means Asia and Pacific countries are performing better in comparison to other countries. Blueprint to close the Women's Health Gap Report. This report was prepared by the World Economic Forum blueprint to close the women health gap report. Women health gap report को जो gap अछि से gap को कम करिबा पई ये report को publish करा जायतला कहा द्वारा World Economic Forum द्वारा and the McKinsey Health Institute with the collaboration of World Economic Forum and McKinsey Health Institute. Women leave 25% more their lives in poor health when compared to men. So 25% more of their lives in poor health
पुअर हेल्थ रे से 25% अधिका दिन बंची थांती मेन कठारु 9 सिलेक्टेड कंडीशंस ड्राइव 1/3 द वुमेन्स हेल्थ गैप ओके सो वुमेन हेल्थ रिलेटेड जो गैप अछि से विषय ये हाईलाइट करूची UNICEF report on education, the report titled Learning Interrupted, the Global Snapshot of Climate-Related School Disruption in 2024. कहा द्वारा रिलीज करागला यूनिसेफ द्वारा रिलीज करागला मन रखते लर्निंग इंटरप्टेड जो स्कूल चिल्ड्रंस माने अच्छी क्लाइमेट चेंज फल स्कूलिंग एंड एजुकेशन रे कौन इंपैक्ट पड़ुची दिस हैज बीन स्टडीड by the UNICEF. 242 million students from the pre-primary to upper secondary education have experienced the school disruption due to the climate events in 2024. Maybe heat wave ही पारे, flood ही पारे, maybe अपन करो untimely rainfall ही पारे, cyclone ही पारे, any such circumstances. The report identified 119 climate hazards that led to the school disruption. Fourth Industrial Revolution Impact Report. The World Economic Forum released the Center for the Fourth Industrial Revolution Network 23-24 okay impact report मन रखते हुए fourth revolution जो Industrial Revolution Impact Report this has been released by the World Economic Forum. The report focuses on research and impact generation in the areas of intelligent age, agriculture, health, biotechnology and the energy transition. So that means these are the basic necessities which are required for the industrial revolution. Fourth industrial revolution होची जोटा आपनकर खास करी जो new set of technologies जो आपनकर अछि the Sago pilot program in Telangana which is involving around 7,000 chili farmers was mentioned in the report regarding the farmers welfare in terms of to make the agriculture into a commercial activities or agriculture into the agri-entrepreneurship jota mein koche. It also highlights the significant initiative like the use of drones or the technology that is use of drones for the healthcare delivery in India, how innovation can address global challenges. Okay. So drones for healthcare delivery and innovation can address the global challenge. Next hochi electricity 2025 report. International Energy Agency recently released the electricity 2025 report. International Energy Agency recently released the electricity 2025 report. Global energy demand rose by 4.3% in 2024 and forecast to continue to grow at close to 4% out of the 2027. China emerged as the highest consumer of electricity, leaving behind the USA and European Union. So China consumption of energy electricity has increased beyond this USA and European Union. This has been mentioned in the electricity 2025 report by the International Energy Agency. Global CO2 emission from electricity generation are projected to stabilize from 25 to 27 following the 1% rise in 2024. India's nuclear power rose to 13%. India's thermal power capacity will rise to 283 gigawatt by 2032. This report mentions. UNESCO's report on the multilingual education 2025. The report titled Language Matter. Global guidance on the multilingual education were released by the UNESCO. मन रखते हुए United Nations जो UNESCO institute टी अछि से UNESCO agency has released the Language Matter. Global guidance and the multilingual education यानी कि local language रे कोभली भावरे education को provide करा जाउची. 40% of the global population does not have access to the education in the language they speak or understand. So खास करके vernacular language or what we call the native language. That means 40% of the people they do not have the access to the education with respect to their own language. तो इधर समाने in a different language रे समाने study करूचन. The figure rises to an alarming 90% in some low and middle income countries. So obviously, low and middle income countries, there figure is 90% and over 31 million displaced youth facing language barriers in the education. So they have simply migrated from one place to another. That is the reason they are facing the language issue with respect to the education. UN report on the women's rights. UN report on the women's rights. The report named the Women's Rights in Review 30 years after Beijing was released by the UN Women. So
बेजिंग रे गोटे कन्वेंशन यानी कि कॉन्फ्रेंस गोटे करा जायतिला से कन्वेंशन आपण कहि परबे 95 रे हेतिला सेथि पई एटाको 30 इयर्स सेलिब्रेट करा जाउची 2025 रे सेथ पई लॉन्च कोन करा जायछि वुमेन यूएन वुमेन जदि आपण कहिबे लॉन्च करा जायछि बेजिंग प्लस 30 एक्शन एजेंडा रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट मन रखते बेटा while 1531 legal reforms have been enacted since 1995 to support the gender equality, women still hold only 64% of the legal rights that men enjoy. So although this Beijing conference is all about the women empowerment, asserting the women rights in different sphere, but still semanka rights rate 64% ame dekhuche in comparison to the men. Now moving to the global terrorism index in 2025, the number of countries with a record terrorist incident increased from 58 to 66 countries in 2024. So 2024 re number of countries affected by the terrorist activities has increased. Burkina Faso remains the country most impacted by the terrorist this year. Okay, Burkina Faso, the most impacted countries. Niger and the Pakistan had the largest increase in the death from the terrorism. Terrorist attack jumped from by 63% in the West, and Europe was most affected, where attacks doubled to 67. Islamic State has expanded the operation to 22 countries. So ISIS Bardwan 22 countries re function Gurujan remains the deadliest organization active in the Syria and the DRC. India is ranked the 14th in terms of the terrorist attack or victim of the terrorist. Okay. So ये क्वेश्चन भी आसी पारे कही होबनी कारण पहलगाम अटैक जेतु हेतिला तेनु चांसेस इज देयर. सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो थरे इंडिया रे रैंक अछि 14. CPRI report 2024, the Stockholm International Peace Research Institute released the reports on the arms transaction, that is the CPRI report. Ukraine was the most or world's largest importer of major arms due to this Russia-Ukraine war between the 20 to 24. The country's import surged nearly 100 times over compared to the 2015 to 2019. India ranked the second in the global arms imports during the same period. So first to Ukraine, India is the second. India's arms import declined by 9.3% between the 15 to 19 and 20 to 24. Okay, so India is the second global importer, and Ukraine is the first one. Future of Free Speech Index 2025, the report titled Who in the World Supports Free Speech was released by the Future of Free Speech, an independent US-based think tank. US-based think tank hochi the Future of Free Speech se publish koruchi who in the world supports free speech. India ranked 24th out of 33 countries surveyed on the question of support for free speech. India रा rank केते अछि 24th out of the 33 countries जोटा कि सर्वे करा जायतिला सेवन को मध्यरु 24 rank रे India अछि. Future of Free Speech Index. International Debt Report 2024. The International Debt Report 2024 was released by the World Bank. Man rakhte beta, the low and middle income countries reached a record high of $8.8 trillion by the end of 2023 and 8% increase in 2020. So low and middle income countries जदि अच्छी अपन देखिए से माने डेप्ट रे पहुंच चलेनी, they are in the debt trap. For India, the report notes an increase in the external debt by $31 billion, reaching 6.79 billion US dollar in 2023. So India रो भी significant amount of borrowing यानी कि debt अपन को देखिबा को मिलिबो as per the international debt report under the World Bank. World Happiness Ranking of 2025. It is released by the Wellbeing Research Center. World Happiness Ranking 2025 released by the Wellbeing Research Center at the University of Oxford in the collaboration with the Gallup and the UN Sustainable Development Solutions Network and Independent Editorial Board. तो जो वेलबिंग रिसर्च सेंटर अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रे ये होची आपनकर कोन ना कहा द्वारा पब्लिश करा जाउची यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा. इंडिया रा रैंकिंग केते अछि 118th in the World Happiness Report 2025, 118th in the World Happiness Report 2025. Okay, Finland has secured the happiest nation for the 8th consecutive year. It followed by the Denmark and the Iceland. So first rank was Finland, Denmark, Iceland. India
इंडिया रो सिटीजन्स माने केते खुशी अछंदी 118th रैंक रो अछन ओके इफ यू सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रैंकिंग्स यदि आपण देखिबे से जगह रे जेंती चैरिटी डोनेशन डिसीजन मेकिंग ओन डिसीजन मेकिंग ये सब कंपोनेंट्स गुडी को फोकस करा जाय थे व्हाइल कैलकुलेटिंग द हैप्पीनेस इंडेक्स Water Development Report 2025, the United Nations World Water Development Report 2025, the mountains and the glacier water towers was released by the UNESCO. The World Water Development Report जोटा अछि कहा द्वारा रिलीज कराई छी यूनेस्को द्वारा यूनाइटेड नेशन द्वारा द एशिया पैसिफिक रीजन इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन्स and most extensive glacier system and is among the most vulnerable to climate change. तेणु ग्लेशियर सिस्टम को स्टडी करबा पई वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट रे मेंशन करा जाई छी तो एठी माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर्स वाज रिलीज्ड बाय द यूनेस्को एटा को मन रखतेबे Global Energy Review 2025, the report titled Global Energy Review 2025 was released by the International Energy Agency. International Energy Agency Global Energy Review 2025. 2025 USCIRF Annual Report, United States Commission on International Religious Freedom has recently released in 2025 report. It recommends to designating India as a country of particular concern due to alleged religious freedom violations. तो बेले बेले जो communal right होची या particular minority against religious persecution होची से जिनसो को नहीं कि international religious freedom United States Commission on International Religious Freedom द्वारा ये country of particular concern रखा जाएगी कहाँ को इंडिया को ओके US द्वारा Maternal mortality 2000 to 2023 report. The report titled Trends in the Maternal Mortality 2000 to 2023 was prepared by the WHO, UNICEF, UN Population Fund, World Bank, UN Department of Economic and Social Affairs. Okay. India's maternal mortality rate was 362 in 2000 and came down to 80 in 2023, marking a decline of 78% over the period. 2000 ରୁ 2023 ଭିତରେ maternal mortality report को किए publish करूଛନ୍ତି combined or joint initiative WHO, UNICEF, UN Population Fund, World Bank and the UN Department of Economic and Social Affairs. Okay. Technology and Innovation Report is देखिए 2025. The 2025 Technology and Innovation Report was issued by the United Nations Trade and Development UNCTAD. India was ranked as the 36th in 2024 on the Readiness of the Frontier Technology Index, improving its position from the 48th in 2022. 48th in 2022 रो हमें improve करके आसे 36th 2024. India ranks केते देखंतु 36 out of 170 nation on a global index measuring a country's readiness for the frontier technology यानी कि emerging technologies जो गुडी को अछि ताको को भली भाबर हमें डील करबा ओके से जिनस रे रैंकिंग अपन देखिबे 36th in 2024. Global Financial Stability Report 2025. International Monetary Fund recently released Global Financial Stability Report 2025. ये जो IMF, World Bank, United Nation, these are the major international institutions. एमानकर जो भी report सब publish होउची ताको carefully देखिबे. The report provides an assessment of the global financial system and markets and address emerging market financing in global context. So Global Financial Stability Report is published by the IMF. Global Trade Outlook and Statistics 2025. Geneva-based World Trade Organization revised sharply its global merchandise trade volume growth forecast for the 2025. So Global Trade Outlook and Statistics एटा को किए पब्लिश करूची ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स ग्लोबली केते ट्रेड होची केते क्वांटिटी रे ट्रेड होची इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो जोटा के मर्केंडाइज ट्रेड भी कहा जाउची दिस इज बीइंग मेजर्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन by 0.2% under the current conditions. Okay. Trade and Development Foresights 2025 report. The report was titled as the Trade and Development Foresights 2025. Under pressure, uncertainty reshapes global economic prospects. Uncertainty reshapes global economic prospects. It was released by the United Nations Trade and Development UNCTAD. मन रखते हुए Trade and Development Foresight 2025 report released by the UNCTAD. Global level growth is expected to decline just 2.3%.
and 35 out of the low income countries are in the near debt distress. Debt cycle re semane ochandi, a debt trap re you can see. World Economic Outlook, very common जोटा आपने जानी थी, World Economic Outlook IMF through रे ये IMF ही तक publish करे. The growth forecast for the world economy has been cut to 2.8%. So time to time they simply forecast the growth of globe or global economy, growth of different countries as well. In fact, India's economy is expected to grow at 6.2% in 2025, 6.3% in 2026. Okay, as per the World Economic Outlook, IMF. State of the World's Indigenous Peoples Report 2025, UN Department of Economic and Social Affairs has released this report recently. Indigenous people receive less than 1% of international climate funding, are often excluded from the climate solution. तो ये जो State of World's Indigenous People Report अछि, Indigenous People Report कहा द्वारा पब्लिश करा जाउछि, UN Department of Economic and Social Affairs, UN Department of Economic and Social Affairs द्वारा एटाकू रिलीज करा जाउछि, पब्लिश करा जाउछि. State of Social Protection Report 2025 एटाकू किए पब्लिश करूछि, वर्ल्ड बैंक. State of Social Protection Report 2025 एटाकू पब्लिश से रिलीज किए करूछि 2020 वर्ल्ड बैंक. The State of Social Protection Report 2025, the 2 billion person challenge. Over the last decade, 4.7 billion people across low and middle income countries gained access to social protection. So 4.7 people जो होचंदी across low and middle income countries, they gained access to the social protection. Okay, social security जोटा में कहूचे. So ये होची सेटा World Bank सेटा को release करूची State of Social Protection Report 2025. UN World Social Report 2025. The report is titled as the World Social Report 2025, a new policy consensus to accelerate social progress. Again, that is related to the social security measures. The social security measures that you देखिए is published by the UN Department of Economic Social Affairs in collaboration with the UNU wider. Okay, UNU wider. Global Wind Report 2024. The new assessment was released by the Global Wind Energy Council. Global Wind Energy Council, the current growth projection shows the industry will deliver only 77% of the installed capacity required by 2030 to maintain a viable pathway to net zero emission. A viable pathway to net zero emission. World Press Freedom Index 2025, it is released by the Reporters Without Border. It is released by the Reporters Without Border, and India ranked 151st with a total score of 32.96 in 2025, moving up 8 places from the 159th last year. Okay, so little bit of improvement you will find, but still हमें 151st rank रे हमें एबे भी अछु Reporters Without Border द्वारा रिलीज करा जाए. Human Development Index, it is released by the United Nations Development Program. 2025 Human Development Report was titled A Matter of Choice, People and Possibilities in the Age of AI. Matter of Choice, People and Possibilities. India was ranked at the 130 out of the 193 countries in 2023 and the UNDP's Human Development Index. 193 country ru 130 country hochi India marks a 3-spot improvement from 133 in the previous year. Last year केते थिला 133 यानी कि 2022 रे 23 रे जदि आपण देखिबे as per the 23 ये होची 130 with an SDI value of 0.685. India remains in the medium human development category, not the advanced one or a better one, medium. Okay, India showed progress in reducing gender inequality, finding itself ranked at the 102 on the Gender Inequality Index out of the 193. जो schemes गुड़ी को अच्छी plus recently we have passed the Parliamentarian Act जोटा की reservation for the women in the state and central legislature, city union legislature. तो से जगह भी हमें ऐठी देखी परेबा gender inequality जो अच्छी narrowing down होउची. Global Report on the Internal Displacement 2025. The latest report was released by the Internal Displacement Monitoring Center IDMC. Disaster-related internal displacement were at an all-time high across the world.
with a 45.8 million forced out of their homes in 2024. तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जदि आपण देखिबे मॉनिटरिंग सेंटर ये जिनस आपण देखि परिबे ओके Global EV Outlook 2025. Global EV Outlook Report 2025 was released by the International Energy Agency. Global EV Outlook electric vehicle जो अपन करो छी global sales of electric cars which exceeded 17 million in 2024 are tracked to surpass 20 million in 2025. Okay, 20 million in 2025. So International Energy Agency द्वारा Global EV Outlook को publish करा जाउची. Global Report on the Food Crisis. Let's see. 2025 Global Report on the Food Crisis was released by the Food Security Information Network. मन रखते हुए को एजेंसी द्वारा पब्लिश करा जाउची Food Security Information Network. 295 million people around the world are now experiencing acute hunger and malnutrition जोटा हमें कहूचे हमरो हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी अछि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किए पब्लिश करूची जो माने ऑनलाइन अछंती से माने आंसर करिवे कमेंट सेक्शन रे ग्लोबल हंगर इंडेक्स किए पब्लिश करूची सो एक्सपीरियंसिंग हंगर दिस इज twice as many as 2020 and marks the sixth consecutive annual increase. Sixth consecutive annual increase. That is Food Security Information Network. World Heart Report. World Heart Federation was launched this report. Nearly 1 in 10 global cardiovascular diseases deaths are now attributed to the high body mass index. 2022, 878 million adult lived with obesity compared to the 194 million in 1990. The mortality from obesity related heart diseases has more than the double in the past 3 decades. Okay. The World Heart Federation जो टाची से publish करूची World Heart Report. State of the World's Animal Health Report. The inaugural State of the World's Animal Health Report was released by the World Organization for Animal and Health. World Organization for Animal and Health. Okay. Infectious animal diseases जो टाके हमें कुछ zoonotic diseases transmitting from the infected animal to the human being, leading to previously unaffected regions and the species nearly half capable of zoonotic transmission are spreading between the animals. Okay, so World Organization for Animal Health, the report हुई World Animal Health Report. Okay. World Meteorological Organization Global Climate Forecast 25-29. World Meteorological Organization has issued Global Annual Decadal Climate Update for 25-29. World Meteorological Organization मन रखते हुए Global Climate Forecast. Easy connect करेगा climate अच्छी तो Meteorological Organization. 80% of possibility is there for at least 1 year between 2025 to 29 will surpass the warmest year on record, currently 2024. So more such warmest year will be there in future by owing to the change in the climatic condition and the weather pattern. Trends Artificial Intelligence Report. According to Maker's report, India contributes highest share of ChatGPT's mobile application users. According to Maker's report, it is ahead of the US and Germany, and it is also the third largest user base for DeepSeek and a Chinese AI platform. Okay, तो ये Maker's report यानी कि Maker गोटे जो एजेंसी अच्छी से पब्लिश करूची ट्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट. यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट. यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 24-25 has raised a serious concern over the gender inequality with respect to the education. Okay, the boys are consistently falling behind the girls in reading proficiency, especially in the middle income countries. So this is kind of crucial. So the enrollment ratio देखिए boys मनंकरो enrollment ratio अधिका था, but it is in terms of the quality education outcome, that means consistently falling behind the girls in the reading proficiency rate. Boys are far behind than the girls. In India, only 5% of women held top positions such as the vice chancellors or the directors in 189 national institutions in 2021. This is quite crucial कि 5% केवल महिला जी की टॉप पोजीशन ऑक्युपाई करूछन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रे
जोटा कि 189 नेशनल इंस्टीट्यूशंस इन 2021, यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट देखिए, US was adding 5,62,000 millionaires as the country's जोटा आपनकर high net wealth जोटा आपनकर होची income. India's billionaires are emerging faster than the millionaire. India has roughly 250 billionaires, just half of the China, which has roughly 520 billionaires. India had 4290 ultra high net worth जोटा income आपनकर net worth income 30 million asset dollar over compared to the 22,780 in China and 13,620 in Japan. India's high net worth individual population grew 5.6% in 2024, with their collective wealth rising to 8.8%, outpacing both China and the global peers. That is the reason inequality is so high in India. So World Wealth Report आपण देखी परिबे, okay, 2025. World Economic Forum Gender Gap Index 2025, India has ranked 131 out of 146 countries in the World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2025. Global Gender Gap Report 2025, with a parity score of just 64.1%, India is among the lowest ranked countries in the South Asia. South Asia re India huchi lowest in terms of the gender parity. This rank stood behind its neighboring countries like Bhutan 119, Nepal 125 and Sri Lanka, that is 130th. India was ranked 129th in 2024. Bartaman seta body ke 131 in 2025 re. Okay. Gender Gap Index, World Economic Forum. World Economic Situation and Prospects. The report is released by the United Nations Development, Economic and Social Affairs in collaboration with the UNCTAD and others. World Economic Situation and Prospects 2025. Global GDP growth is projected to slow to 2.4% in 2025 and 2.5% in 2026. India's GDP growth was revised down from 6.3% in 2025 from 7.1% in 2024. तो GDP growth जो थिला 24 रे 7.1% and जेटा reduce है कि 25 रे 6.3% GDP growth को revise करा जाइछि projection in fact, and World Economic Situation and Prospect एटा को release के करूछि आपनकर United Nations Department of Economic and Social Welfare collaboration with the UNCTAD and others. main दीटा एजेंसी रा नाम मन रखिबे. World Energy Investment Report. The new report was released by the International Energy Agency. International Energy Agency, the World Energy Investment Report. The global clean energy investment are projected to reach $2.2 trillion in 2025. India has significantly increased its investment in renewable power from $13 billion in 2015 to $37 billion in 2025. Okay, 2025 रे 37 बिलियन डॉलर को इंक्रीज है. सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये न्यू रिपोर्ट को रिलीज करुची वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को. ओके, नेक्स्ट ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2024 एटा रिलीज की करुची यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR. फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू व्हाट, वॉर ही पारे, रिलीजियस प्रोजिक्यूशन ही पारे, क्लाइमेट चेंज ही पारे, डिजास्टर ही पारे, human conflict ही पर any such reason and force displacement हमें देखुचे. Global Tobacco Epidemic 2025 report. The report was released by the World Health Organization. Tobacco अच्छी तो Health Organization मन रखिए at World Conference on Tobacco Control in Dublin, Ireland. The report focuses on 6 proven WHO empower measures to reduce the tobacco use. Tobacco causes over 7 million deaths yearly and launched the Empower strategy in 2008. Okay, so global tobacco epidemic released by the World Health Organization. FATF report on the financing and invasion. Financial Action Task Force has released a report on the proliferation financing and sanctions evasion.
The proliferation financing means raising or moving money, supports weapons of mass destruction, threatening global security. If you see the Financial Action Task Force, जोटा कि G20 द्वारा फॉर्म करा जाइथिला, not G20, G7 द्वारा फॉर्म करा जाइथिला, if I am not wrong, G7 द्वारा फॉर्म करा जाइथिला, and what was the necessity of Financial Action Task Force? Generally जो money laundering and terror financing को से check करे, and we have already seen जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट रो जो अच्छी क्राइटेरिया से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ही करे. ओके, एंड मेजर थ्रेट्स कम फ्रॉम कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया एंड नॉन स्टेट टेरर एंड क्रिमिनल ग्रुप्स. तो बेसिकली किसी कंट्रीज अच्छे जो मैंने फाइनेंस करुँच क्या नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो कि स्टेट एक्टर्स जो मैंने कि काफ़ी हाईली वल्नरेबल अनप्रेडिक्टेबल लाइक नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब कंट्रीज. तेणु रशिया भी ये इंक्लूड ये सिंस दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय द G7 कंट्रीज, ऑल दोज डेवलप्ड कंट्रीज वेस्टर्न डोमिनेटेड. तेणु रशिया ना भी सेठी अच्छी, से ईरान ना भी अच्छी. इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ इंडियाज पर्सपेक्टिव, रशिया इज ए गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, ईरान इज ए गुड फ्रेंड ऑफ India as well. India top 100 in SDG index, the latest sustainable development report released by the United Nations Sustainable Development Solution Network. ये क्वेश्चन आपनकर प्रिलिम्स रे आसीबार चांसेस बहुत अधिका. द रीजन होची सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो गोटे कांसेप्ट आपनकर प्रिलिम्स रो सिलेबस रे अछि. Released by the United Nations Sustainable Development Solution Network, India ranks 99th position out of the 167. 99th position in the out of the 167 countries as per the 2025 SDG index, with a score of 67 from the 109th rank in the 2024. So that means India is performing better in terms of the SDG index. This is the first time India secured a position among the top 100 countries. China ranks 49th with a score of 74.4, while US is 44th and with the 75.2 points. 2025 Global Peace Index हमें देखिबा. Global Peace Index is produced by the Institute for Economics and Peace. Global Peace Index is produced or published or released by the Institute for Economics and Peace. The GPI covers 99.7% of the world's population, uses 23 qualitative and quantitative indicators from the trusted sources. That means peace को measure करा जाउची, शांति को measure करा जाउची. India ranks 115th out of the 163 nation with a GPI score of 2.229. Iceland is the safest country globally, ranked highest across all domain with respect to the peace index. ओके, तो इंडिया रे रैंकिंग होची 115तम, हाईएस्ट या सबुठु टॉप रे किए अछि आइसलैंड. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट. 2024 was the warmest year on record in Asia with widespread and the prolonged heat wave. Global mean temperature in 2024 was the highest from 1850 to 2024. It was surpassing 1.45 degrees Celsius set in 2023. So WMO, World Meteorological Organization report हुची State of the Climate in Asia 2024 report, and 2024 was the warmest year. Global Drought Outlook Report 2025. The latest Global Drought Outlook 2025 report was published by the Organization for the Economic Cooperation and Development. Global Drought Outlook 2025 report published by the organization OECD countries जोड़ी का मैं कहूँ Organization for Economic Cooperation and Development. Spain is one of the OECD countries that most exposed to the intensification of the drought. This is quite interesting as well. अपन देखी थे पे जो माने traveler माने अच्छे खास करके इंडिया रो यूरोप जाऊ चंदी, they have through videos they are saying यूरोप रे जो टेम्परेचर रहिबा कथा मिनिमम जो एवरेज टेम्परेचर रुहे, कारण समर वैकेशन में बहुत आम इंडिया रो यूरोप को जाती, तो से जगह बर्तमान एवरेज टेम्परेचर काफी बढ़ी बढ़ी चलছে एंड हाई रोचे. तेणु ड्राउट कंडीशन इन ड्राई फेज भी सेठी आपन को देखा मिलूँ, तो ड्राउट कंडीशन भी देखा मिलूँ. सो स्पेन इज वन सच OECD countries affected the most. Average economic impact of a drought 2025 is already at least double that of 2000. It is expected to increase by a further 35% by 2035. World Investment Report 2025. The World Investment Report 2025 was released by the UNCTAD. Mandakti World Investment Report 2025 was released by the UNCTAD. The global foreign direct investment declined 11% in calendar year
2024 to $1.5 trillion. This was making a second consecutive year of the double-digit contraction. The international project finance deals collapsed 27%. Okay. Global drought outlook again. I think just I'm discuss କରୁଥିଲେ. Global drought outlook, Spain highest. Kichi information additional dekhi naba eti. 1980, 37% of global land has experienced significant soil moisture decline, and 40% of the planet has experienced more frequent and intense drought in recent decades due to the climate change and human activity. Nuclear weapon landscape 2025. The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Yearbook 2025 was published recently. 12,241 nuclear warheads owned globally, 9,614 in military stockpiles. The Russia pakhare apan dekhibe nuclear warhead, it has 5,459, is the highest one. In fact, the highest than the US, more than the US, only 5,177. India has 180, apan the Pakistan lo dekhibe 170. China has 600 nuclear warheads, growing 100 per year since 2023. Okay, so Operation Sindoor ceasefire kon pai koragala. This is one such factor. Obviously, government is not discovering or government is not delivering this thing. Obviously, I mean, the koi pari bhai nuclear power, right? So deterrence achi Pakistan side ro. So ceasefire India korichi Operation Sindoor re. Anyway, moving to the next. Oil 2025 Energy Agency jota apan achi International Energy Agency report. The report Oil 2025 was released by the International Energy Agency. Global oil demand is forecast to increase by 2.5 million barrels per day between 2024 to 2030. At the same time, the global oil production capacity is projected to rise by over 5 million barrel per day to 114.7 million barrel per day by 2030. So oil demand is rising. So we need to explore the alternatives as well. World Economic Forum releases Energy Transition Index. World Economic Forum releases Energy Transition Index. Energy related carbon dioxide emission have climbed to all-time high, that 37.8 billion tons last year. तो energy से conventional energy ही हमें use करूँचे, fossil fuel को ही use करूँचे. So obviously by citing this climate change and condition, we need to explore the alternative जोड़ा कि green and clean energy, what we call. QS World University Ranking 2026 globally, the MIT, Massachusetts Institute of Technology of the US, has written the best institute in the world, position for the 14th time this year. A total of 54 universities is featured this year, including 12 IITs. Global Trends Report Forced Displacement, released by the United Nations High Commissioner for the Refugees. Forced displacement already I mean discuss भी करी जेटा ये forced displacement repeat हीची. Persecution, violence, human rights violence, disaster जो बने displaced हो जने कहाँ द्वारा publish करा जाऊँची मन रखते हुए United Nations High Commissioner for Refugees. State of the World's Children, published by the United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF. Theme हुई listen to the future, 1 billion children, extremely high climate risk. India among the most vulnerable due to high child population. Massive disparities in the digital access. High income countries 95% access, low income only 26% access. Urge youth participation in the global problem solving. Okay. Global Hunger Index जोटा आपनकर हमें देखिए concern worldwide and wealth hunger life and worldwide global hunger index. India rank होची 105 out of 125. Child wasting 18.7%, highest globally. Child stunting 35.5%, under 5 mortality rate is 3.1%. Notably program Poson 2.0, ICDs, mid day meal, anemia मुक्त भारत, ये सब जिनसे को सरकार प्लान करूचंदी, टारगेट करूचंदी. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑलरेडी हमें डिस्कस करी चेटा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर 159 आउट ऑफ 180, स्लाइट इंप्रूवमेंट, डिक्लाइन इन द जर्नलिस्टिक सेफ्टी,
concern about the media ownership concentration and political environment labeled as the problematic. तो थ्रेट जो जर्नलिस्ट मानकर अच्छी फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो कंट्रोल करा जाइछि, न्यूज को जो फिल्टर करा जाउछि, ये सब जिनस को ए केस रे मेजर करा जाउछि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रे, व्हिच इज पब्लिश्ड बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. गवर्नेंस इंडेक्स से देखिए नो न्यू एडिशन इन 23-24 जो लेटेस्ट डेटा अच्छे एज पर द 2021 एटा किए पब्लिश करूचे देखंतु डीए आरपीजी टॉप परफॉर्मेंस के थिला गुजरात लार्ज स्टेट रे, गोवा स्मॉल स्टेट, दिल्ली हुची यूटीज रे, कवरिंग 10 सेक्टर्स 58 इंडिकेटर्स. सो गुड गवर्नेंस इंडेक्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जदि आम देखा यूएनसीटीएडी द्वारा एफडीआई डाउन बाय द 2%, डेवलपिंग एशिया डाउन बाय द 8%, एफडीआई इनफ्लो स्टैग्नेटेड ड्यू टू regulatory barriers, services and renewable energy still attractive, FDI in SDGs in developing nation fell by the 10%, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सेक्टर गुड़ी सेठी एफडीआई आपनकर कमिची यानी कि डिक्लाइन हेछि. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जदि देखिबे इंडिया रा रैंकिंग हैज बीन इंक्रीज्ड ओनली 1 प्लेस 39 को इंप्रूव हेछि. कहा द्वारा पब्लिश करा जाउछि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हाई परफॉर्मेंस इन आईसीटी सर्विसेस एक्सपोर्ट. एवं जदि आपण टोटल एक्सपोर्ट बास्केट देखिबे इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, इंडिया रा सर्विसेस एक्सपोर्ट हैज आल्सो इंक्रीज. दैट वाज द रीजन जोते पई कि ट्रेड डेफिसिट जो थिला या करंट अकाउंट डेफिसिट जो थिला इंडिया रा, दैट हैज बीन स्लाइटली इंप्रूव्ड. स्टार्टअप इकोसिस्टम आपण देखिबे, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन देखिबे, इनोवेशन ओवर अचीवर रिलेटिव टू जीडीपी. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स यदि आपण देखिबे इंस्टीट्यूट होची वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया रा रैंक केते देखंतु पेटेंट फाइलिंग रे 6th, 4th होची ट्रेडमार्क रे, 7th इन द इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर यानी कि जोटा आपनकर पेटेंट राइट्स अछि, इनोवेशन कार पर्सनल रिसर्च कंट्रीब्यूशन को हमें को भली भाबरे पेटेंट दे परिबा, प्रोटेक्ट करि परिबा. दिस इज व्हाट is all about. Patent filing growth 15.7%, highest globally, leading sector pharma, IT and engineering. Poverty, Prosperity and Planet Report 2024, 44% of the world live under 6.85 dollar per day. ताठू कम रे से जीवन बंचुचंदी. 129 million in India are under the extreme poverty line. Okay. Food inflation, unemployment cited as the poverty drivers. High poverty pockets जदि आपण देखिबे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा जोटी कि आपण को सबुठु अधिक पॉवर्टी देखिबा को मिलिबो as per the World Bank. Network Readiness Index 2024, India rank has been increased 11 places, that is 49. Portland's Institute जोटा कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स को पब्लिश करूची. AI स्किल पेनिट्रेशन, ICT सर्विसेस एक्सपोर्ट, ये जो टेक्नोलॉजी प्लस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्लस जो आईसीटी रा पेनिट्रेशन, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जोटा में कहूचे. फास्टेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अमंग द G20 कंट्रीज. ओके, इन टर्म्स ऑफ द इंडिया रो फास्टेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अमंग G20 कंट्रीज. इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट एटा की पब्लिश करूची इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट फेल जोटा कि 22 रे थिला 12.1%, 2019 रे सेटा केते अछि 17.5%, यानी कि 2019 ने 17.5 रु सेटा कमी की 12.1% इच 2022 रे. दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमुची. आपण दी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखिबे 15 रु 29 वर्ष भितरे 30% एटा इंक्रीज हेची. 21% 21.6% इंक्रीज हेकी 30 हेची इन 2019 रे. तेणु गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी आपनकर बढ़ी, इनफॉर्मल वर्कर्स मानकर पार्टिसिपेशन बढ़ी, प्लस अर्बन यूथ फेस द अंडर एम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स अर्बन यूथ जो मैंने अच्छी as per their requirement जी या as per their eligibility they are not getting the job. So India employment report मन रखते हुए ILO plus Institute for Human Development ये पब्लिश करूची रिपोर्ट को. रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, द डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट एटा को पब्लिश करूची. 85% रूरल यूथ वांट टू स्विच जॉब्स. aspirations shifting to private sector to government role, कारण जॉब सिक्योरिटी नहीं, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को से स्विच करने को चाहूँ. एग्रीकल्चर इज अनअट्रैक्टिव ड्यू टू लो इनकम एंड क्लाइमेट स्ट्रेस. ओके, सो दिस इज वन सच फैक्टर जो कि डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करूची यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट. रिपोर्ट ऑन द करेंसी एंड फाइनेंस
एटा को किए पब्लिश करूची इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तार होची थीम पब्लिश्ड बाय द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करूची बट थीम होची इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स आपनकर जो पेमेंट अच्छी पेमेंट को भली भाव डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भली भाव अच्छी यूपीआई हैंडल्स 75% ऑफ ऑल रिटेल डिजिटल पेमेंट्स टोटल यूपीआई रे 75% रो टोटल ट्रांजैक्शन रो 75% यूपीआई डील करूची मोबाइल डेटा यूसेज आपण देखिए प्रति मासरे 14.4 जीबी डिजिटल आइडेंटिटी होची आपनकर आधार एम्फासाइज ऑन द सीबीडीसी दैट इज द ई रूपी दैट इज पायलट एंड ओएनडीसी जोटा आपनकर डिजिटल करेंसी को आमे शिफ्ट करबा को चाहूचे ग्लोबल टीवी रिपोर्ट जदि आपण देखिबे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पब्लिश करूची इंडिया 26% ऑफ द ग्लोबल टीवी केसेस आपण देखि परिबे केसेस ट्रीटेड दैट इज 25.1 lakh ट्रीटमेंट सक्सेस रेट 89% टीवी इंसिडेंट रिड्यूस्ड बाय द 17.7% सिंस 2015 ये जो 89% ताले 11% काहेकि प्रॉब्लम रहउची ना देयर आर मेनी सच इंस्टेंसेस जो जगह रे ट्रीटमेंट तो चले छे मिड ऑफ द ट्रीटमेंट से माने मेडिसिन छाडी दउचंदे दे स्टॉप कंसल्टिंग द डॉक्टर एंड देयर आर केसेस जो केस रे से माने टीवी केस को नहीं कि डॉक्टर पाख को जाऊ ना बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा सो लॉट्स ऑफ मेकानिजम्स आर वर्किंग जो कि लो रेट यानी कि हमें 100% अचीव करि पारू ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जदि आपण देखिबे 2024 यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग एंड क्राइम मोस्ट ट्रैफिक्ड किए राइनो हॉर्न 29% pangolin scale and elephant ivory wildlife crime often linked with the drug and arms trade focus on the enhancing sites compliance sites होची आपनकर कन्वेंशन ऑन जो आपनकर ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जोटा हमें कोच ओके तो मन रखते बेटा की पब्लिश करूची यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्रीज केते ही देखंतु 73% सिंस 1970 थ्रेट कौन अर्बनाइजेशन माइनिंग पोचिंग वेस्टर्न घाट सुंदरबन मोस्ट अफेक्टेड एरिया अर्थ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एंड कम्युनिटी कंजर्वेशन जोटा को आपनकर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हमको शो करूची क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 एटा को किए पब्लिश करूची जर्मन वॉच इंडिया रा पोजीशन कोन 10th अछि हाई परफॉर्मर कैटेगरी अछि praised for solar and wind energy scale off we are focusing on the alternative energy to the fossil fuel ev adoption via the FAME scheme criticism continued coal dependency that is 58% share country climate and development report focus on the balancing climate goals with the development focus on the balancing climate goals with the development india's gdp may lose to 1.8% annually by 2050 without action water efficiency investment 4 times economic return it is published by the world bank country climate and development report country climate and development report which is published by the world bank okay state of the world's forest state of the world forest को के report को के publish करूची food and agriculture organization global deforestation has declined that means deforestation कमुची 10.2 million hectare per year india gain करूची forest that is 2,66,000 mangrove global area that is 14.8 million hectare india experienced net gain by restoration in the sundarban india state of forest report published by the forest survey of india forest plus tree cover जो देखिए 25.17% of india's area highest forest cover madhya pradesh carbon stock that is 7,285.5 million tons forest fire prone zones identified that is 2.8 lakh square kilometer जोटा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 एटा भी 2 वर्ष को थरे पब्लिश करा जाय जानिथिबे 25 भी आसीबो आपनकर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हुई बक्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन CII in VBox graduate employability that is increased 7% year on year 54.81 top domain management is 78% engineering 71.5% most employable states Maharashtra Karnataka Delhi and only 46.2% rural graduates are deemed to job ready baki ko pakhre skill set nahi job pai and this has been published by the Confederation of Indian Industry VBox All India Council of Technical Education एमाने ही प्रोड्यूस करिसेंदी या पब्लिश करिसेंदी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025
ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जो मैंने आम सहित फाउंडेशन कोर्स कवर करने को चाहूँगी देखो ये डबल धमाका सेल रो आज हूँ लास्ट डेट तेणु जो मैंने चाहते प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू जॉइन करने आज ही जॉइन करूँ एवं फाउंडेशन बैच रे कोड यूज करेंगे जे लाइव जो थे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल ओके ता सहित आपण ये हूँ इंग्लिश एंड हिंदी बैच इंग्लिश एंड हिंदी बैच ये हूँ परिपूर्णा बैच इंग्लिश एंड ओडिया एठी भी आपको डिस्काउंट मिल इंग्लिश ओडिया बैच एटा इंग्लिश ओडिया बैच रे आपको सेम फीचर्स अच्छी बट 23 टेस्ट सीरीज आपको प्लस टेस्ट सीरीज फ्री मिल इंग्लिश ओडिया कंपलसरी एठी कवर करा जिवो एठी आपनकर इंग्लिश ओडिया कंपलसरी कवर करा जिवो नाही आरंभ रे बट दुईटी जाक बैच रे जदि आपण फर्स्ट अटेम्प्ट रे प्रिलिम्स क्लियर करूचंदी आपनको फी कंप्लीटली रिफंड कर दिया जिवो प्लस एनसीईआरटी रो गोटे रिकॉर्डेड वीडियो आपनको मिलिबो जोटा कि कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करूची फाउंडेशन पाई प्लस आमर जदि टेस्ट सीरीज आप जॉइन करने को चाहूँगी टेस्ट सीरीज भी अनुशीलन टेस्ट सीरीज आप जॉइन करेंगे प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज जेन लाइव कोड यूज करेंगे सबुठू लोएस्ट मिनिमम प्राइस रे आप परचेस करेंगे 2000 रुपीज रे सो डबल धमाका सेल चली बहु माने आज ही आपंकर लास्ट हो तेणु विदाउट एनी डिले प्लीज जॉइन एंड एठी आपण पीडीएफ टी पाइबे टेलीग्राम चैनल जदि किसी डाउट कन्फ्यूजन क्वेरी थाए मते आपण टेलीग्राम रे भी मध्य रीच आउट करि परिबे ओके थैंक यू वेरी मच कमेंट सेक्शन में जनइबे आमे चेष्टा करिबा जेमती मु रिपोर्ट एंड इंडिसेस को कवर कली सिमिलरली आई विल कवर एनवायरनमेंट इकोनॉमी पॉलिटी एक्सेट्रा सो दैट कि जो करंट अफेयर्स आपनकर सेगमेंट अछि ताकू वन गो वन शॉट वीडियो रे हमें कंप्लीट करि परिबा थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन अनदर वीडियो थैंक यू